एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट्स इन शिफ्ट इन द frequency domain. An important point is that in frequency shifting, here it is plus alpha, then here it is minus alpha. ठीक है, तो ऐसे ही अगर सपोज e रेज टू -2t x ऑफ t, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. व्हाट विल बी इट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म? कैपिटल X ऑफ s +2 or -2, +2 or -2, +2, x of s +2. ओके, तो यहाँ पे ये शिफ्ट है, s +2 और यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे अपोजिट साइन आता. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के केस में अपोजिट साइन आता, टाइम शिफ्ट के केस में सेम साइन आता. बिकॉज सी if you are solving MCQ type paper, then definitely 4 options will be there and their changes in the option will be s +2, s -2, so you should not be confused at that time. In frequency shift we have same sign, in frequency shift we have opposite sign, and in time shift we have same sign. Okay, fourth number property is time differentiation. So टाइम में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो इन लैपलास डोमेन वी हैव मल्टीप्लीकेशन बाय s into x of s minus x of 0 minus. So this is the initial condition. Most of the time these initial conditions are 0. So this is the property number 4. So how you will explain this property? Differentiation in time results in multiplication by s in frequency domain. टाइम में डिफरेंशिएशन हमको एस डोमेन में एस से मल्टीप्लाई करके देता सिग्नल. So this is our property number 4. Differentiation in time results in multiplication by s in frequency domain. ठीक है, so this is your property number 4. This is the initial condition x of 0 minus, and most of the time this initial condition is 0. Similarly, suppose we have 2 times differentiation in time. That means d square by dt square. जब हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे हमको क्या हो रहा था? एक बार s से मल्टीप्लाई हो रहा था. जब हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल हैव s स्क्वायर into x of s. Suppose if I differentiate it 3 times, d cube by dt cube x of t, then here it will be s cube into x of s. Okay, so this is your property time differentiation. तो आपका कंक्लूजन क्या है? आप क्या बोल सकते हैं? अगर हम एक डोमेन में डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे डोमेन में मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से. टाइम डोमेन में वेरिएबल रहता t, दूसरे डोमेन में वेरिएबल रहता s, तो वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा. विद दैट वेरिएबल द सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड. ओके, सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, एका डोमेन मध्ये शिफ्टिंग तर दुसऱ्या डोमेन मध्ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन. सेम थिंग हियर. If we are differentiating in one domain, we have multiplication by that variable in frequency domain. Similarly, we can have differentiation in frequency domain also. We can have differentiation in
frequency domain also. So next property is frequency differentiation. Next property is frequency differentiation. तो जब हम frequency में differentiate करेंगे, when we are doing differentiation in frequency, so we have multiplication by t in time domain. Multiplication by t in time domain. If we are differentiating in frequency domain, we have multiplication by t in time domain. So this is our property number 5. Again the thing is that here when we are doing the differentiation, we have same sign. Here d by dt x of t has a Laplace s into x of s. But here, if we have differentiation in frequency domain, we have minus sign. या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस टी एक्स ऑफ टी एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, माइनस टी एक्स ऑफ टी एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म डी बाई डी एस एक्स ऑफ एस, डी बाई डी एस एक्स ऑफ एस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, तो क्या आपका कंक्लूजन निकला? व्हाट इज योर कंक्लूजन? Differentiation in one domain results in multiplication by variable in another domain. Okay, ठीक है. What is derivative of x square? 2x. Derivative of x square is 2x. What is integration of 2x? What is integration of 2x? X square. So that means integration and derivative are opposite operation. Integration and derivative are opposite operation. X squares are derivative 2x, 2x are integration x square. So these two are the opposite operation. Integration derivative are opposite operation. तो जब आप t से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आपको क्या मिल रहा था? डिफरेंशिएशन. जब आप t से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आपको क्या मिल रहा था? डिफरेंशिएशन. जब आप t से डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? If you are multiplying by t, you are getting differentiation. If you are dividing by t, then what you will get? Integration. If you are multiplying by t, we are getting differentiation in another domain. Similarly, if we divide by t, to our signal, we will have integration. We will have integration. So this one is your property number 6. It will take some time to remember all these properties, but that are not difficult. If you apply some logic, by remembering by some logic, you can remember all these properties. So x of t by t has Laplace transform, integration s to infinity x of s ds. Okay. Next property, convolution. Next property is convolution, time convolution. So x of t, star indicates, here star indicates convolution. Star indicates convolution. So in SS unit number 2, you will see the convolution. What is meaning of convolution and all that. For time being, you just remember that star is indicating convolution. जैसे अभी तक आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिक्स के ऑपरेटर स्टडी किए ना, वैसे ही एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है कन्वोल्यूशन. So x of t convolution, h of t, x of t is one signal, h of t is one signal. Between these two signals, we are doing convolution. It is denoted by star. So convolution in time results into multiplication in frequency domain. और यही लैप्लास का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कन्वोल्यूशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे अच्छा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना रहता.
So that is one advantage of Laplace transform, that convolution results into multiplication. Convolution results into multiplication. So this is your property number 7. Then eighth property is initial value. So initial value we are always finding for time. इनिशियल वैल्यू किसकी इनिशियल वैल्यू, टाइम की फ्रीक्वेंसी की. सो आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू हम हमेशा टाइम की फाइंड करते हैं. वी ऑलवेज फाइंड इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू फॉर टाइम. सो दैट्स व्हाई. एंड very important point, now I am going to tell you very important point. Time domain signal is represented by small x and frequency domain signal is denoted by capital X. Okay. So that is why x of 0 indicates initial, and that is nothing but limit s tends to infinity s into x of s. Limit s tends to infinity s into x of s. So this is nothing but initial value theorem. X of 0 is equals to limit s tends to infinity s into x of s. X of 0 is equals to limit s tends to infinity s into x of s. अभी कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे मैंने लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी क्यों लिया है, वाई नॉट 0 और समथिंग. s is nothing but frequency variable. S is nothing but your frequency variable, and t is nothing but your time variable. T is nothing but your time variable. Relation between time and frequency, t equal to 1 by f. Time is reciprocal of frequency. Frequency is reciprocal of time. So जब मेरा टाइम जीरो रहेगा, जब मेरा टाइम जीरो रहेगा तो फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू हो जाएगी, इंफिनिटी. 1/0 is infinity. So that is the reason we have taken limit here as infinity. So x of 0 equal to limit s tends to infinity s into x of s. So this is nothing but initial value theorem. So this thing is nothing but initial value theorem. ओके. अभी इनिशियल वैल्यू हो गया. नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इनिशियल वैल्यू हो चुका. नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इनिशियल वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू विल बी फाइनल वैल्यू. तो थोड़ा इमेजिन करो क्या होगा उसका फॉर्मूला फाइनल वैल्यू का. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइनल वैल्यू. What will be formula for final value? Infinite. Okay, x of infinite equal to x of infinite equal to आगे लिमिट s tends to 0 s into x of s. So this is the final value theorem.